Minister, Viksit Bharat, where we are expecting to be one of the largest economies alongside that of China and US. So that is where we are, and it's a very important topic for us. We have invited the SEBI chairperson, who will be the chief guest for the day, and we had invited Honorable Governor. Unfortunately, he has some engagement, immediate pressing engagement, and we received a letter only yesterday that he will not be able to attend. Apart from that, as far as the company, the ICSI is concerned, we have currently over 75,000 members, and nearly about 230,000 or 240,000 students who are there with us on join the course. The need for company secretaries is going to grow in the years to come, and that is because of the various facts which I would like to elucidate. One is, India is the fastest growing economy in the world. We are currently the 5th largest economy, and we are targeting, the Honorable Prime Minister targets about by 2030 we will become the 3rd largest economy. We have already crossed 3.8 trillion GDP growth, and we are expecting to touch about more than 7 trillion by 2030 when we become the 3rd largest economy. Not to be outdone, we are also looking at the government, Honorable Prime Minister is aiming to touch the 30 trillion mark by 2047. So 2047 is a very significant year, because it is the 100th year of its independence, and the growth momentum which we have had in the last 10 years has not been heard in the prior to that. So we were the 10th largest economy, now the 5th largest, and now become the 3rd largest by 2030, and possibly one of the largest economy alongside of China and USA by 2047. So that is where we are heading to. So that is very significant for the profession. And in this kind of a growth, the one profession which is going to benefit the most is that of a company secretary, because when you talk about the growth in the GDP, there's one sector which will be directly affected, which will have every growth directly inflicted on it, is that of a capital market. And when we talk about capital market, we have to talk only of one profession, that is the company secretary. So that is the purpose of this conference, and we are looking at how we will be able to position ourselves in the coming years in getting this number. Although we are currently about 75,000, our target to have about 140,000 to 150,000 members by 2047. So we are encouraging more students to join the course. And this course, today I can tell you with great pride, there is no qualified company secretary who is unemployed. He is unemployed more out of reason that he does not want to work for somebody. But otherwise, they are getting employed. Most of the company secretaries who are qualifying within a very short span of time, they are getting employed. And because the growth in economy always reflects the positiveness, and therefore we expect that this will continue. And mind you, this growth which we have set for ourselves is going to be consistent in the years to come. And even the IMF has already said that India will continue to have the 7% growth, which is the highest anywhere in the world. Please understand, 7% growth is one of the highest in anywhere in the world, and this growth will be able to sustain itself in the long run, because this growth is not in one sector, it is a combination of various sectors put together. I have my colleague with me, Mr. C.S. Dhananjay Shukla, who is the Vice President. I also have my council colleague, Mr. Pawan Chandak, who is the Program Director. And to my extreme left is Mr. Ashish Mohan, who is the Secretary of the Institute. And to my extreme right is Mr. Mehul Rajput, who is the Chairman of the WRC. I would also request my colleague, my understudy, Mr. Dhananjay Shukla ji, to share a quick thought from his side. पत्रकार मित्रों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने बताया कि कल से हमारा 52वां राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है, और इस बार का जो विषय है वो ये है कि विकसित भारत 2047 में कंपनी सेक्रेटरी के लिए नए अवसर क्या क्या हो सकते हैं, और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत महत्वपूर्ण शख्सियतों और व्यक्तित्वों को आमंत्रित किया है।
जो प्रोफेशन के विभिन्न आयामों पर अपनी बात रखेंगे। जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने बताया, लगभग 1500 के आसपास डेलीगेट इसमें शामिल होने वाले हैं। श्रीमती माधवी पूरी बुच जो सेबी की अध्यक्षा हैं, वो कल चीफ गेस्ट के रूप में जो है शिरकत करेंगी और हमारे सभी कंपनी सेक्रेटरियों को संबोधित करेंगी। विषय रहेगा कि जो है आने वाले समय में जब हम विकसित भारत 2047 की तरफ हम अपना कदम बढ़ाएंगे तो जो सामने आने वाली चुनौतियां हैं उससे हम कैसे निपटें और कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन भारत के विकास की इस महत्वपूर्ण यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान कैसे करेगा। और जब भी हम कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन और कंपनी सेक्रेटरी संस्थान, भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान के महत्वपूर्ण विकास के योगदान की बात करते हैं तो वह तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक हमारा प्रत्येक मेंबर इस यात्रा में शामिल नहीं होता। तो लगभग जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने बताया, हमारे 75,000 के आसपास के मेंबर हैं, लगभग 2.5 लाख के आसपास से स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो ऐसे जब वार्षिक समारोह, जब राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित होते हैं तो हम बड़े सारगर्भित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और चर्चा बड़ी सार्थक रहती है और इन चर्चाओं से जो भी जो है अमृत मंथन से जो अमृत निकलता है उसको लेके हम आगे की नीतियां जो है निर्धारित करते हैं और उन नीतियों के जो है आधार पर आगे की जो है कार्यक्रम और दिशा निर्देश आगे तैयार होते हैं। तो मैं समझता हूं कि पवन जी के प्रोग्राम डायरेक्टरशिप में और माननीय नरसिम्हन साहब के जो है नेतृत्व में यह कार्यक्रम बहुत अद्भुत होने वाला है और मैं इस अवसर पर अपनी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम की अध्यक्षा जो है प्रति कौशिक बनर्जी, जिन्होंने आप सबको आमंत्रित किया, इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है और आप सब भी हमारे साथ इन 3 दिनों की यात्रा में होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों के माध्यम से इस सम्मेलन की जो महत्ता है उसका प्रचार प्रसार होने वाला है और हम सब मिलकर इस सम्मेलन को एक बहुत सार्थक और बहुत 1500 मेंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं और मुझे लगता है कि वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी कल बहुत सारा होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि अभी तक का बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन रहने वाला है। आपका कोई प्रश्न हो तो 3 दिन क्या होना, 3 दिन फर्स्ट डे क्या? कल 2 बजे हमारा सम्मेलन का उद्घाटन होगा। श्रीमती माधवी पूरी बूथ जी उसका उद्घाटन करेंगी, सेबी अध्यक्षा। और जैसा कि मैंने बताया कि हमने विभिन्न सत्र रखे हुए हैं। जैसे अगर मैं पहले सत्र की बात करूं, उद्घाटन के बाद वाला सत्र, तो सेबी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं श्रीमान वी.एस. सुंदरेशन साहब, वो हमारे साथ होंगे और पैनल में जो है सी.एस. सावित्री पारिक जी होंगी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी सेक्रेटरी हैं, भरत वसानी साहब होंगे जो सीनियर एडवाइजर हैं श्री लमरचंद मंगल दास में जो देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म है, मिस सुप्रिया सप्रे होंगी जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है HDFC एसेट मैनेजमेंट की। और सत्र का नाम रहने वाला इवॉल्विंग सेबी रेगुलेशन स्टेप टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत में जो है बिजनेस करने में बहुत आसानी हो, रूल रेगुलेशन बहुत आसानी से पालन किए जाए, सिंप्लीफिकेशन हो। तो सेबी का उसमें जो है रेगुलेशन को कैसे इवॉल्व करना है, इस पे जो है एक सत्र रहने वाला है उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद। ऐसे बहुत सारे हमने कल और परसों और मिला के बहुत सारे सत्रों में विभाजित किया है, 3 दिन 8, 9, 10। तो और कल्चरल इवनिंग भी है 8 तारीख को कल और 9 तारीख को। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। तो मैं आप सब लोगों को जो है एक टेंटेटिव प्रोग्राम शेड्यूल सर्कुलेट कर देता हूं जिसमें पूर्ण विवरण है, जिससे आपको कार्यक्रम की पूर्ण रूपरेखा पता चल जाएगी। तो मैं समझता हूं कि सब मिलके इसको हम बहुत सफल बनाने वाले हैं और आप सबकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर।